बस अच्छा ठीक है, अब जाहिद मैं यार, अपने जी जाहिद, मेरा ख्याल है गुफ्तगू शुरू करें। जो आपका टॉपिक है, डिजिटलाइज्ड लाइव्स, मेकिंग सेंस ऑफ लाइफ एंड लिटरेचर इन हाइपर टेक्नोलॉजिकल एज। अच्छा, इसमें ना दो तीन सवाल मैं थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ सामने। एक सवाल तो ये है कि जो जो भी टेक्नोलॉजी नई आती है वो हमारी कौन सी, ये 7 क्वेश्चन हैं जो नील पोस्टमैन ने पोज किए थे, मैं उसमें से दो तीन आपके सामने रख कि हम्म टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी सोशल नीड को रिस्पॉन्ड करने के लिए आती है। पहला सवाल ये पूछना। हम्म दूसरा सवाल ये है कि जो टेक्नोलॉजी आती है नई, वो उसके बेनिफिशियरी कौन होते हैं, और हम्म अगला सवाल ये है कि उसके लूजर्स कौन होते हैं। हम्म और एक और बात जो मैं खुद से ऐड कर रहा हूं, जो हमारी पिछली डिस्कशन में भी हुई थी, कि यार अल्टीमेटली वो ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी है उसकी वेलबीइंग के लिए क्या कंट्रीब्यूट करती है। मसलन उसके इंडिकेटर्स अगर हम लें कि पॉवर्टी में इजाफा हुआ, कमी हुई, डिस्पैरिटी में इजाफा हुआ, कमी हुई, इक्वालिटी में इजाफा हुआ, या वो ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई, तो इन सारे हवालों से आप बाकी गुफ्तगू के साथ इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा कोशिश करें, बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन में हम टेकअप कर लेंगे। तो ओवर टू यू अगेन, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आप शुरू करें, 30 मिनट आप करें गुफ्तगू, उसके बाद फिर हम भी शरीक हो सकेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लेक्सिबल है, आप अगर कंक्लूड करने में वक्त लग जाए तो कोई इशू नहीं। ओवर टू हाँ, बहुत ओवर टू। शुक्रिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम सोच रहे थे कि हम एक सेशन इकट्ठे करेंगे और किसी भी मौजू पे जो हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट का मौजू है उस पे एक गुफ्तगू रखेंगे। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपके मुकालमा फोरम में इतने सारे लोग आपके साथ शामिल हैं और इतने डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ये यकीनन एक बड़ी खुशाइंद और दिलचस्प बात है। और चूंकि आपके इस फोरम का नाम मुकालमा है, तो इट्स मोर लाइक अ डायलॉग। इसमें लेक्चर या किसी टॉक या कोई एकेडमिक किस्म की जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी बजाय एक फ्री थिंकिंग, आई थिंक इज अ मोर वैलिड वे टू, मोर रेलेवेंट वे टू कम्युनिकेट। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं दो गुजारिशात करूंगा, और बल्कि कन्फेशंस होंगे। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे रहते हुए मेरी जो जुबान है उसकी जो जो प्योरिटी है वो शदीद मुतासर हुई है। तो मैं ठेठ उर्दू या ठेठ पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें दर आते हैं अंग्रेजी के अल्फाज। और ये सरासर मेरी कोताही है कि मैं सोचता नहीं हूँ कि इसका मुतबादल उर्दू में क्या होगा या पंजाबी में क्या होगा। तो अगर मैं एक ऐसी खिचड़ी पकाऊं जुबान की, तो मैं पेश की उसके लिए माजरत करता हूँ आपसे। अजायद, ये इशू नहीं है, और ये हम सब करते हैं, इट्स ओके। हाँ, लेकिन इसके बारे में इसका शाऊर होना जरूरी है। हम सब करते हैं, लेकिन वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो और शायद आई थिंक यहीं से मैं अपनी बात का आगाज करूंगा कि हम सब सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं, और अब हमारी एक पैरेलल जिंदगियां सोशल मीडिया पे हैं। और किस तरह की पर्सनालिटी हम सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट करते हैं और किस तरह की जिंदगी हम असल में एक रियल थ्री डायमेंशनल स्पेस में जीते हैं, उसमें अपोरेंटली तो लगता है कि हमारी सोशल मीडिया की जिंदगी भी उसी जिंदगी का परताव है या उसकी उसका शैडो है जो हम हकीकी जिंदगी में करते हैं। लेकिन दरअसल आई थिंक केस इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम बेशक इस्तेमाल करते रहें सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू, और जैसे अभी भी हम ये मुकालमा सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं, तो लेकिन उन एक्शंस का इदराक होना, उनके बारे में एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये दो अप्रोचेस हैं। कुछ लोग एक तो नेगेशनिस्ट होते हैं जो हर चीज़ को रद्द करते हैं, ये एक तरह से मुलायत है और मजहबी एटीट्यूड है। लेकिन दूसरी अप्रोच ये होती है कि आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मुकम्मल हमायत करनी ज़रूरी है, या उसके उसका एक क्रिटिकल डिस्कोर्स या उसकी जो पूरी डायमेंशंस है उसके पीछे, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसको समझना भी ज़रूरी है। तो हमें आई थिंक जो इसी से हमारी इस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था कि हम इस मौजू पे एक बात रखें, और इस सारे प्रोसेस को पिछले 15-20 साल में जो ये नया फिनोमिनन इमर्ज हुआ है, सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइफ, ये क्या हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज कर रहा है, और कैसे हम एक नए तरह के एक ह्यूमन स्पीशीज
में कन्वर्ट हो रहे हैं। आई थिंक अगर हम इसको पहले एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखें, थोड़ा सा मैं बैकअप इसका बैकग्राउंड बिल्ड करना चाहूंगा अपनी बात करने के लिए, कि why we need to talk about this topic, कि हम क्यों हमें ज़रूरत पेश आई है कि हम इस डिजिटल लाइव्स को एनालाइज करने की कोशिश करें। तो आई थिंक सबसे पहले बहुत ही दो तीन मुख्तलिफ तरह के इस पे थीरीज हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इट्स अ न्यू एज, इट्स एन एवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इससे जो डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुई थी 20वीं सदी के आगाज में, ये उसकी ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। सो हाउएवर आई थिंक मैं कुछ अपने मुशाहिदात आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ओपिनियंस होंगी, कुछ एजुकेटेड ओपिनियंस होंगी और कुछ सवालात होंगे, और कुछ मेरी लाउड थिंकिंग है जो मैं खुद से सवाल करता हूँ, सोचता रहता हूँ, और मैं आपके इस सारे मुकालमा के जो दोस्त हैं इनके साथ जो बाद में जब इस सारे मेरी गुफ्तगू के बाद हम फोरम खोलेंगे तो हम उस पर तफसील से, मैं दूसरे लोगों की राय भी जानना चाहूँगा, फिर उन बातों से हमारे कोई कॉन्सेंसस या कोई नई ऑब्जर्वेशंस जन्म लेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिस हुआ क्या है, ये पिछले 15 साल का जो एक नया वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये दूसरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि जब पहले 20वीं सदी में रेडियो आया या टीवी आया, वो भी एक तरह से एक्सटेंशन थी ह्यूमन इंटरेक्शन की, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। आप एक आवाज को किसी दूर दराज जगह तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आई थिंक द बुनियादी डिफरेंस ये है कि जो 20वीं सदी के आगाज का, जो 1895 समथिंग में जो चेंजेस आना शुरू हुई, जिसमें लफ्ज मैसेस का, जो मैस जिसको कहते हैं, अवाम जिसको कहते हैं, तो अवाम ने अपनी एक कलेक्टिव आवाज को जन्म दिया, यानी द राइज ऑफ द मैसेस, और उसी से फिर एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत का आगाज हुआ कि it is not only the one way order, is not an authority from the king to the masses के अवाम के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जिसको सिविलाइजेशन की री इन्फोर्समेंट भी कहा जाता था, कि भाई ऑर्डर है, एक दरबार है और वहां से इंस्ट्रक्शंस नीचे आती हैं और अवाम जो है वो उसको फॉलो करती है। जो मैस है, जो मैसेज है, दे फाउंड अ वॉइस कोलेक्टिवली, और वो जो कलेक्टिव वॉइस है, जो मैस की आवाज है, जिसको अवामी राय कहते हैं, वो इमर्ज हुई। हाउएवर उस अवामी राय में एक इंटरनल कोहेरेंस थी, उसमें एक मकसद था कि भाई जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी है, वो कुछ भी हो, वो लेबर राइट्स हो, वो सैलरी का मसला हो, वो वर्किंग आवर्स का, मतलब 20वीं सदी की यही बड़े एक आउटकम्स है ना, कि भी उसने लाइफ को रेगुलेट किया, कि भी मिनिमम वेज क्या होगी, अवाम के हकूक क्या होंगे, सिविल राइट्स क्या होंगे, सोशल राइट्स क्या होंगे, और उसमें लेबर यूनियंस इमर्ज हुई, और लेबर यूनियन बेसिकली इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैसेस, कि जो नीचे अवाम काम कर रहे हैं, देन दे गिव द कलेक्टिव वॉइस टू द सिस्टम। अब जो 21वीं सदी के आगाज में हुआ क्या कि जो द मैसेज टर्न्ड इनटू स्वार्म, यानी कि जो हजूम है, जो जो अवाम है, वो एक हजूम में कन्वर्ट हुई है, जो उसको वॉल भी कहेंगे, स्वार्म कहेंगे। अब जो डायनामिक्स है स्वार्म की और जो डायनामिक्स होती हैं अवाम की, उसमें बुनियादी फर्क ये है कि जो स्वार्म है, जो हजूम है, उसके अंदर उसकी इंटरनल कोहेरेंस बहुत वीक होती है, या इंटरनल कोहेरेंस उसकी नहीं होती। वो एक एक बड़ा वोलेटाइल किस्म का उसका इंटरनल मूवमेंट होती है, और उस वोलेटिलिटी में यू कैन नॉट हैव काइंड ऑफ अ वन डायरेक्शन। अब इस सारे डिजिटलाइजेशन में, digitalization is basically is a era of crowd, is era of this swarm, is a whole का era। मैस में और क्राउड में ये फर्क है कि मैस में इंडिविजुअल खत्म हो जाता है, उसमें इंडिविजुअल स्पेस नहीं होती, उसमें जो फर्द है वो इज्तिमा में जम हो जाता है, उसमें इज्तिमा एक कलेक्टिव आवाज के तौर पे उभरता है। लेकिन हजूम में हर कोई इनफरादी तौर पे अपनी आवाज बुलंद करता है, और सोशल मीडिया बुनियादी तौर पे ये डिजिटल
डिजिटलाइज्ड लाइफ ने एक ऐसे फर्द को जन्म दिया है जिसकी अपनी आइडेंटिटी इज्तमा में जम नहीं होती. ही इज एन इंडिविजुअल स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ, constantly struggling, constantly trying to optimize his or her voice. उसका गेम ऑफ रूल ऑफ द गेम क्या है कि इंडिविजुअल हैज अ प्रोफाइल, उसकी एक अपनी शनाख्त है, अपनी आइडेंटिटी है. वो आइडेंटिटी बेसिकली एक कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है या एक प्रोजेक्शन ऑफ हिज बीइंग है, और उस प्रोजेक्शन में ही इज फ्री टू पुट एंड शेप एंड फॉर्म वट एवर फॉर्म ही डिफाइंस. ये जो परफॉर्मेंस है ये बेसिकली इसमें कोई मीडिएटर नहीं है. सो यू मेक अ प्रोफाइल, यू क्रिएट अ पेज, यू क्रिएट अ identity, you create a personality. Personality means is you create a being, a person who is not entirely real, but he is kind of a hyper real. He is beyond reality. On that beyond reality individual, वो अगर किसी collective cause का हिस्सा भी है, but he never ever kills his own identity. So when he has a voice, he constantly want to keep his voice being heard, but he will never become part of the collective being. और this is basically not a democratic way. ये एक जमहूर की आवाज नहीं है. This is opposite to the जमहूर. So पहला आर्गुमेंट मेरा ये है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइफ में एक जो नया बीइंग जन्म लेता है उसको हम कहेंगे होमो डिजिटलिस. एक जर्मन वर्ड है, और एक टीवी पे यहाँ पे जर्मन मीडिया में एक सीरीज भी आई थी, बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल वर्क जिसमें लोगों से उन्होंने इंटरव्यूज किए और पूछा कि भी जो इज बेसिकली फ्यूचर लैब वाज अ प्रोजेक्ट कि भी जो फ्यूचर का फर्द है, जो होमो डिजिटलिस्ट है, जो डिजिटल एज की क्रिएशन है, हाउ ही सीज लाइफ, उसकी जो लाइफ की और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अबाउट लाइफ, हिज रिलेशनशिप विद नेचर, हिज रिलेशनशिप विद लव, उसके इमोशंस क्या है, उसकी हैप्पीनेस क्या है, उसकी वर्क स्पेस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन या उसका इरोस क्या है. तो द बेसिक प्रॉब्लम इज कि एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट. अब हाउ व्हेन आई से एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग, इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, लेकिन बुनियादी तौर पे इसका मतलब क्या मैं लेता हूँ, इसका मतलब ये लेता हूँ कि हमारा जो इंटरेक्शन है दूसरे फर्द के साथ, वो एक वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफॉर्म हुआ है. अब मैं आपके साथ मुखातब हूँ, तो मैं मेरी जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस है मेरे, वो आपके साथ एक बड़े महदूद एक थर्ड मीडियम के थ्रू हो रहे हैं. मेरी सारी सेंसेस उस तरह इन्वॉल्व नहीं है. मैं आपको छू नहीं सकता, मेरी सेंस ऑफ टच इज नॉट इन्वॉल्व, माई सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट इन्वॉल्व. मेरा जो इंटरेक्शन है इट इज बेसिकली इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मीडियम, जो अपरेंटली ये लगता है कि दिस मीडियम गिव्स मी अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद यू. ये डायरेक्ट कांटेक्ट तो है, बट इट इज नॉट इन द वैक्यूम. दिस इज इन अ मीडियम, और मीडियम dictates in itself. एक दूसरा आर्गुमेंट ये मैं बिल्ड करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया में एक दूसरा अहम पेशरफ्त ये हुई है, जो जिसको सब लोग काफी हद तक अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं कि ये बड़ा इनकलाबी अमल है, और ये डेफिनेटली इनकलाबी अमल है कि इसमें से जो मीडिएटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक एज के जरिए या प्री इलेक्ट्रॉनिक एज के जरिए जो मीडिएटर आया था, वो किसी टीवी चैनल का मालिक हो, वो एडिटर हो, वो ब्रॉडकास्टर हो, वो पब्लिशर हो. तो अब इस डिजिटल मीडिया में जब द कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट कंज्यूमर दोनों दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ईच अदर. Grande memoria y poi torna por ti. सो जो कंटेंट क्रिएटर है और कंटेंट कंज्यूमर है, वो apparently directly in content, or everyone is a content creator and content consumer. अब मिडल मैन के निकल जाने से आपने एक हायरार्की तोड़ दी, और apparently ये
मुगालता आया कि अब इसमें जो एक अथॉरिटी है, जो एक तरह से डोमिनेशन है, जो डिसाइडर है दरमियान से, वो निकल गया है, तो देन आई कैन डू व्हाटएवर, आई एम फ्री, आई एम लिबरेटेड, आई एम अ न्यू लिबरेटेड मैन ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि ठीक है, एक खास तरह की मीडिएशन, खास तरह की डोमिनेंस निकल गई है, लेकिन उसको एक और तरह की अथॉरिटी ने जनरेट रिप्लेस किया है. वो जो एक नई अथॉरिटी जनरेट हुई है इसके थ्रू, हु इज दैट बीइंग? वो जो अथॉरिटी है वो टेक कंपनीज. अब द टेक कंपनीज, they are invisible, you do not interact with that tech companies, लेकिन that tech company is basically even more dangerous and more harmful in a certain way. क्यों? Why is it so? जब टेक कंपनीज क्या करती हैं कि दे बेसिकली केम अप विद दिस आइडिया, जैसे somehow, जैसे आपने ये सवाल भी रखा कि टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होती है और किस जरूरत के तहत सामने आती है. टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है एज एन आउटकम ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग एंड यूटिलाइजिंग द साइंस. डेफिनेटली एक आइडिया जनरेट होता है, देन इट टर्न्स इनटू सम काइंड ऑफ अ utilizable entity, or वो utilizable entity then eventually becomes a medium where through which people then start getting benefit from. और फिर उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं. फिर वो जब एक चीज इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्केल पे बढ़ जाए, फिर उसकी जो डायनामिक्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं. देन इट जस्ट काइंड ऑफ बिकम सेमी ऑटोनोमस. फिर उसकी जो शक्लें हैं वो बदलती रहती हैं. देन उसके अंदर से फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इवॉल्व होते हैं. इसीलिए शायद जब ये सारा इंटरनेट का आगाज हुआ, नो वन न्यू, किसी को भी नहीं इल्म था कि 20 साल में दुनिया की शक्ल ही कुछ और बदल जाएगी. वो साइंस फिक्शन तो था, लेकिन ये इदराक नहीं था कि वो साइंस फिक्शन इस तेजी के साथ हमारी हमारी रियलिटी में मर्ज हो जाएगा. तो अब क्या हुआ कि टेक कंपनीज जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और मैं और आप मुफ्त में बात कर रहे हैं, हम किसी अखबार को या किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को पैसे नहीं दे रहे. बट व्हाई इज इट सो? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि जो बगैर पैसे के चलता हो? अब जो लोग ये सारा सेटअप चला रहे हैं जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, दिस नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू कीप एंड एस्टैब्लिश दिस सेटअप. हु इज रनिंग दैट and what they earn from this? तो जब आप खुद कुछ खरीद नहीं रहे, when you are not paying something, when you are not paying in terms of money, then you basically paying in terms of something else, and that something else is your private data. You are a product by yourself. When you are not selling a product, when you are not creating a product, then you become product by yourself. And this is kind of a agreement which we never read when we join the Zoom or Facebook or Twitter or whatever social media. These companies ask in return of the free service, then they can have an access of anything you do through that medium. Of that anything is your content, your private content, whatever you share, you call, your text message, your words, your facial expressions, your gestures, your body language, your videos you send. Then in that videos you have your keywords, you have everything. This is a kind of a hyper capitalism, जिसको इसने शोशाना जुबोफ की बहुत मशहूर किताब है द एज ऑफ सर्विलेंस कैपिटलिज्म. तो दिस इज अ सर्विलेंस कैपिटलिज्म जिसमें अब जब नई तरह की कमोडिटीज पैदा हुई हैं. अब व्हाट इज द न्यू कमोडिटी? जब 20वीं सदी के इख्तिताम पे जब इस कैपिटलिज्म वाज एट इट्स पीक, उन्होंने कहा कि हर चीज तो कमोडिफाई हो चुकी है, व्हाट टू डू नाउ? तो जो चीज कमोडिफाई नहीं हुई थी वो थी ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सप्रेशंस, ह्यूमन इंटरेक्शन, एंड द डेटा, the data based on human activity. That data became the most expensive and free commodity. और इंडिविजुअल जो एक फर्द जो है उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि how expensive this human data which has apparently no material value will become
the most profitable business, most profitable commodity. अब जो पिछले 20 साल में these tech companies are the richest people of the world. How they work on that? This is not a post-capitalist age. This is a hyper-capitalist age, जिसमें वही सारी कंपनियां they sell these products. They basically constantly observe you. You turn into a transparent being, and transparent being has no privacy. They know exactly what you like, what you don't like, what makes you happy, what makes you sad. उस सारी transparency में you lose your privacy. And when something is very transparent, it becomes pornographic. एक मेरा बड़ा favorite philosopher है, Chul-Han is a Swiss Korean philosopher. वो यहाँ पे प्रोफेसर था जर्मनी में, वो रिटायर हुआ रिसेंटली, उसकी बहुत सी किताबें. He coins these terms. तो he said कि जब when this transparency society, which is transparent to all these tech companies through the social media, this is a society of pornography. What does the pornography mean? When there is no eros in there, when there is no eroticism, when there is no intimacy is left, and everything is so present, everything is so naked and exposed, okay, then there is no chance of any subtleties, no delicacies, no human this nuances are missing. Everything is so exposed, and that basically is the internal principle of this social media. क्या होता है कि आप कोई भी फेसबुक पेज उठाएं, किसी की भी जो कि बड़ा फ्रीक्वेंट यूजर है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म का, आप उसकी प्रोफाइल देखना शुरू कर दें, व्हाट विल हैपन? आप एक चीज पोस्ट करेंगे, आपको उसके ऊपर कुछ लाइक्स आएंगे, कुछ कमेंट्स आएंगे, देन इट विल kick in this kind of a sense of narcissism. Then you will like, you say, okay, तो बड़ा अच्छा है कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग मेरा देख रहे हैं, they appreciate कर रहे हैं, and we are always hungry of attention. So these surveillance capitalists, they know some fundamental principles of human psychology. First, human being is narcissist by nature. Human being need appreciation. We need attention. That's how these social media websites, which are more popular, they're designed in a way they give you credits against the data, private data you share. The credits are that under every post, there are buttons for likes, for thumbs, for emotions, emojis. Then there are credits of this, you can comment, people can appreciate you, people can smart talk, people can just have a quick, very cliched appreciation, and that is enough to keep you engaged. Just one example, अगर सोशल मीडिया की सारी पोस्टों के नीचे से सारी जो पब्लिक फीड है उसकी ऑप्शंस निकाल दें, कोई आपकी पोस्ट पे कमेंट ना कर सकता हो, कोई कुछ ना कर सकता हो, आई एम श्योर हाफ ऑफ द पीपल विल स्टार्ट क्विटिंग, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल क्विट इवेंचुअली. लेकिन क्यों हम क्विट नहीं करते? कि वी टर्न इनटू दिस लूप ऑफ फ्री labor, the free slaves of the content generating factory, जिसमें we are rewarded with some dopamine, some chemical which our brain produce when someone likes our post or when someone comments on something and someone appreciate that. And this is somehow the most beneficial capitalist model, कि आप कंटेंट पे खुद जनरेट करते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और in return what you gain is just a kind of a praise by other people. So now the people working for each other or against each other, giving credits to each other or salaries to each other in terms of the likes, comments, the dopamine is being exchanged. So it is kind of a so addictive, and now people spend, I think, 1/4 of their day or even more on the social media doing some kind of an activity. And what is that activity? It is not an intellectual activity primarily. Majority लोग जो content generate करते हैं, share करते हैं, produce करते हैं, it is all very cliched content. So one should be very careful and very
informed and critically informed about this. So this is my third argument. अब इसके नतीजे में जो सोसाइटी पैदा होती है, जो अदब पैदा होता है, जो कि इस मौजू को हम दोबारा लाइफ एंड लिटरेचर है तो हम लिटरेचर को भी इसमें शामिल करेंगे कि बीइंग अ राइटर, बीइंग अ पोएट, और ऑल दोज पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस फोरम, they all somehow are connected to literature by one way or the other. तो इसके नतीजे में, इस इंटरेक्शन के नतीजे में, इस सोशल पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, जिसमें आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लिटरेचर डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ आवर वेरी मच प्रेजेंट लाइफ. तो अदब की क्या इसमें सूरत हाल हुई? फिर अदब के साथ ये हुआ है कि अब हमने देखा कि अच्छा, जब आप कोई तहरीर लिखते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करें, वो शायरी हो, फिक्शन हो, वीडियो हो, वो विजुअल्स हो, या वो टेक्स्ट इन एनी फॉर्म, तो आपको वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, चूंकि वी वांट टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल, बीइंग अ सोशल एनिमल. नाउ वी आर डिजिटल एनिमल्स. व्हाट हैपेंड इन दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ दिस सोशल एनिमल, कि जो मीडिएटर है, जो वो पब्लिशर हो, वो एडिटर हो, वो ब्रॉडकास्टर हो, ही इज ओमिटेड. अब मैं बतौर कंटेंट जनरेटर अपने व्यूअर के साथ या अपने कारी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया हूँ. मेरी चीज़ें अब फिल फॉर दूसरों तक पहुँचती हैं, मुझे उसमें लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, और मुझे पब्लिक फीडबैक मिलता है. देन आई एम माय ओन रीडर, आई एम माय ओन पब्लिशर. आई मीन अपैरेंटली तो लगता है कि ये अच्छी बात है, इसमें एक और तरह की अथॉरिटी जो है वो खत्म हो गई है. इट्स ऑल्सो वेरी डेमोक्रेटिक. एक आदमी जो मामू कांजन में बैठा है, एक आदमी जो मैक्सिको में बैठा है, एक आदमी जो कहीं भी बैठा है, वो एक दूसरे को पढ़ सुन देख रहे हैं. अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मुमकिन ही ना होता गुफ्तगू करना अगर हमारे पास जूम ना होता तो. ओके, दीज अपॉर्चुनिटीज आर नाइस, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड ऑफ अ कॉइन. सो इसकी फ्लिप साइड क्या है, जो कि हर लिखने वाले को उसका इतराक होना चाहिए. और आई थिंक इस नुक्ते के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा और फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे डिस्कशन में. और फ्लिप साइड इसकी जो ज्यादा खतरनाक है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर एनी राइटर, कि he is reading and he is getting this direct feedback from his readers. Why it is dangerous? It is good. We always get feedback. In older times, we got letters, we got the public opinion through the publishing, book appreciation ceremonies, whatever. इसके बुनियादी नुकसानात जो मुझे लगता है ये है कि जो प्रोसेस होता है लिखने का और पब्लिश करने का, उसके दरमियान में जो वक्त है, जो एक डिवेलिंग टाइम है, जिसमें जो क़याम है, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब आप लिखते हैं, you write, you just vomit out some feelings, some emotions. फिर लिखने के बाद असल प्रोसेस शुरू होता है, जो है एडिटिंग का, क्राफ्ट का, उसकी रिफ्लेक्शन का. लिटरेचर बेसिकली इज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन हैपनिंग. वो जो रिफ्लेक्शन है, दैट calms you down, that gives you time to reprocess many times what you have said. और उसी में से लैंग्वेज की जो ब्यूटीज इमर्ज होती हैं, उसी में से ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो न्यूनेस है, जो जो बड़ा आर्ट है, दैट जनरेट्स इन सॉलिट्यूड. वो सॉलिट्यूड में क्यों पैदा होता है कि बड़ा आर्ट बेसिकली एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक नए अंदाज से देखता है. He transforms the existing experience into a new type of experience. Yeah, it creates a totally different new ways of seeing life. Social media के साथ ये होता है कि social media is a medium of immediacy. It's a medium of presence. इसकी जो temporality है, that is temporality of the present. इसमें ना कोई past exist करता है, ना कोई future exist करता है. So you are generating in the very moment. It is consumed in the very moment, and it does not leave a trace. अगर वो trace छोड़ता भी है, so that is so short-lived, and that trace is determined by this tech company, how much time this particular post will be given to be seen by the other people before it is being replaced by the other post.
Or second biggest problem is that, okay, if you may find a nice reader, people, 20, 30 people get connected by your very, let's say, apparently serious post, which maybe is a masterpiece and gets a Nobel Prize at some point. Again, the problem of the social media is the way the data or the information appears on your wall, it is so broken, there is no internal coherence. एक पोस्ट है जिसमें एक कत्ल की खबर है, उससे अगली पोस्ट होगी जो कि किसी बॉलीवुड का गाना होगा, उससे अगली पोस्ट होगी जो कोई सियासी पोस्ट होगी. तो there is no internal order. Who is creating this pattern? There is some kind of a method in this madness, or this method is beyond your control. And then these tech companies, they create the echo chamber around you, around every user. They are not individuals now, they are users. तो दिस echo chamber, या उसको उर्दू में मैंने सोच रहा था इसको क्या कहेंगे, खाना बाज गश्त, जिसमें आपको अपनी तरह की ही आवाजें बार बार सुनाई जाती हैं. You feel that the whole world is like that everyone's news feed, everyone's profile is so personalized that you lose the concept of the real world. That's why we call it a virtual world. कि आपका जो सच है, it is subjective truth now. Or who gives you the sense of subjective truth? That tech company who is controlling the page and who is showing you the certain data in certain pattern. और अदबी तख्लीक के लिए आपको तन्हाई चाहिए होती है, आपको distractions से साइड पे होके उसके ऊपर dwell करना होता है, उससे reflect करना होता है. Then you start getting the kind of a beauties of that text, जो कि is always between the lines. It is not exposed. It is not said. It is what is not said. Or social media does not allow you to dwell on something to find out what is not being said. So this is basically a contradiction, that social media is not a platform for a good literary activity. It is a platform for propaganda. It is a platform for self-projection, some narcissistic kind of a satisfaction, or a very informational usages. Beyond that, I think this is not a way to find out what is a good literary way to connect to the literary pieces. Or I think there's a lot more to talk about. So then I think I will wrap up here. These were my basic kind of opinions. Baki, I have a lot more to say, but that may come in the question answer session. Thank you very much. जाहिद, बहुत शुक्रिया. मैं चूंकि हमारी इस पर डिस्कशन होती रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि बाकी लोगों को शामिल गुफ्तगू करें. तो कोई सवाल किसी का? पहला अयाज कदीर साहब. जी डॉक्टर साहब. जी अयाज कदीर साहब. डॉक्टर साहब सवाल करें, आपने हैंड रेज किया है ना, आप करो बेटा. अगर वो नहीं है, मेरा ख्याल है कोई मसला होगा टेक्निकल. जी थैंक यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि basically everything that you said, I agree with that. And also I'm a very private person, so I'm very selective in what I post and what I don't post. But I think the topic was technology, and we only confined ourselves towards social media. If you would cover artificial intelligence and ChatGPT, because these are the things that we are, talking about a lot, and a lot of things. Being a lawyer, they say, oh, AI is going to replace you, but they don't know that, we all need a license to practice. So these kind of things. Secondly, through Instagram, I know everyone is very materialistic and everyone wants to post what they are doing. Like when I was in Pakistan, I used to say, the people who go to Europe, oh my God, they live their life and they post on social media. And now I'm in North America and I don't post anything. So उस हवाले से लेकिन उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ businesses flourish through Instagram. Like whenever I have to get a service, I go to their Instagram page, I see their work, their portfolio, and then I get in touch with them and see, okay, whether I want to do that or not.
Recently, one of my friends, she became a makeup artist, and within 1 year, I think she's making a lot of money through Instagram because, you know, personalized ads and everything. So when we talk about all these, you know, being a product and everything, I think we should talk about the positive sides as well. I don't know, like I never imagined I would say that because I'm not the kind of person who's very social and very active on social media. लेकिन recently ये है कि everything, what I know is कि if you don't like something and you cannot change that, I think you should at least benefit from that. So it's not like कि अंग्रेज आएंगे और हम English नहीं सीखेंगे. You should learn English and be one of them. So मेरा यही है कि if a lot of businesses are flourishing from technology and you are eventually a product anyways, why don't be part of the people who are actually benefiting from this? Like if I want to run my, you know, company, a law firm, I would reach out to the people who are basically in distress. For example, immigration matters. So I will cater to all those Indian students who want to, you know, apply for their study permit or PR. So agar main ye kahungi ki oh my god this is bad, I don't think this is going to help me anyways. So I think these are the stuff. Like recently we are working on generating captions because we are uh, a software company, legal software company. So we are you know, we told chat GPT कि हमारे लिए सारी जो है ना वो captions लिख दे. So we tested Kagi, ChatGPT, and one of the other ones, Kaboot. So, you know, it did the work for us. So as long as it is, you know, serving our purpose, I know it is replacing human jobs. लेकिन फिर इस तरह तो आप Walmart जाएं और वहाँ पे there is a self-service counter. Technology is taking over the tail pe khada hua aadmi. So I think we need to adapt ourselves to technology and kind of know, like, you know, what do you want to share and what you don't want to share. Like I am of the opinion कि जो बंदा मेरे में interested है, who would, you know, text me and ask me कि what do you like, what's happening in your life. Like I don't post anything. So all these things, I want you to throw light on the positives as well, because I see कि पाकिस्तान में वैसे ही हर जो नई चीज आती है ना हम उसके एंटी हो जाते हैं. Like YouTube बैन रहा. I feel like if when I was in Pakistan, YouTube खुला होता. है ना बेटा, Yeah. क्वेश्चन करें. और भी बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन करना Yeah. चाह रहे हैं. आपका तो मेरा प्रिसाइज question क्वेश्चन. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव्स को अगर हम देखना चाहें और चैट जीपीटी को अगर हम इंक्लूड करना चाहें, हाउ दैट कैन हेल्प अस and how we can, you know, flourish using social media, because there is no escape now. ठीक हो गया. थैंक यू जी जाहिद. Yeah, so बिल्कुल, I think मैंने जो शुरू में बात की कि there is no denial. So there are two type of people: the people who go in denial and then just become religious, and the other type of people who are total advocates. So the important thing is that you do use all these things, and that's why the effort that we are talking through this media and someone is running this show. So we are benefiting from the technology, but we should be aware of that. We should be critical of that. So for example, chat gpt, I mean there's a lot of debate going on also. Let's say हमारे डिपार्टमेंट में, तो मैं साइंस करता हूँ और पेपर साइंस का एक चीज होती है कि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आप पब्लिकेशन की शक्ल में दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं. तो चैट जीपीटी कैन राइट योर रिसर्च पेपर्स. You give data, you give some instructions, you communicate with chat gpt, and then it can run your experiment. And now what we are doing also in our lab, that we are building robots who will run chemical reactions. So we are also getting benefit from the machine learning and artificial intelligence, and now the chemists are partially being replaced by a robot who is running from point A to B and then doing the chemical reactions and synthesis. I bought a robot who is just doing spin coating or making films that we can be used for the supercapacitors, the batteries, or all that. So these things are being integrated very rapidly, very quickly. The question is, what cost we have to pay for that? So if you buy a robot who works for you doing this very laborious jobs, let's say on a cash counter, you're scanning the packets of the food you buy, or software who can just write your emails, this is fine. There is no denial. However, what is behind that? Who is getting
the benefit from that. You should know that you are targeting the clients. That's how what these marketing companies are doing, and that exactly is a surveillance capitalism. That you are getting the personal data of the people, then your phone has a health sensor, and the medical or pharmaceutical companies know that 5,000 people in this town are having some kind of a problem with the backbone because they're constantly complaining, and then they start selling the product of, let's say, the belts who provide you some warmth, have some electric heater in there. So then in that town you will sell 2,000 the belts who can just give you back massage while you are sitting on your table or chair. I mean, that's how the whole this hyper capitalism or this tech capitalism is working. Or the law firms know, okay, 20 people got divorced in this town by reading their WhatsApp messages. And then the lawyer is now buying this data, paying to these companies to buy this data. That was the Cambridge Analytica scandal. That's exactly was that. So, and then in the same way, if you can access such data, you can also access a data about the political opinions. And then a Trump-like person can pay to these companies, get the data, and then draft a certain type of advertisements. They will target that particular advertisement, and then it will influence the political decision making. This is all happening. This is nothing new. You cannot stop that. However, you can think and you can understand, and then you can filter out what is fine and what is not fine, what is not okay. So that is my main argument. आपका माइक बंद है शाहिद साहब. आपका माइक बंद है शाहिद साहब. ओह अच्छा जी, राणा साहब क्वेश्चन करें. जी, सबसे पहले तो डॉक्टर जाहिद का बहुत शुक्रिया. बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत अच्छी क्वालिटी की डिस्कशन की. बहुत अच्छे इन्होंने आर्गुमेंट्स डेवलप किए. ये जो टर्मिनोलॉजी है हाइपर कैपिटलिस्ट, और इससे मैं एग्री करता हूं कि ये इसका बहुत थोड़ा फायदा जो होता है वो तो होता है लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली वही इनविजिबल कंपनीज जो हैं वो बीच में जो काम कर रही हैं वो फायदा उठा रही हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, और वो यूज कर रही हैं उन लोगों को जो कंज्यूमर्स को जो प्रोड्यूस करते हैं डेटा उसको. अब इस बात से एक और सोशल जो फैब्रिक्स है वो सामने आती है कि सोशली भी हम वल्नरेबल हैं. अब हमारी जो प्राइवेसी है वो हमारे पास नहीं है, वो इंट्रूड हो रही है. कोई और लोग, कोई और कंपनीज इंट्रूड कर रही हैं उसको. अगर सिर्फ हम यही देखें कि हमें तो फायदा हो रहा है, हमारे तो जो बहुत से लोग जो हैं वो फॉलोअर्स हो गए हैं या सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और एक ख़ास हद के बाद वो कंपनीज हमें भी पे करने लग गई हैं, हम इस बात से खुश हो जाएं. लेकिन इस बात को जो इसका फॉर रीचिंग इफेक्ट है, जो उसका ना सिर्फ इस पे के पूरी ह्यूमैनिटी पे बल्कि जो हम पे भी है, वो उसका क्या करना है, मतलब वो क्वेश्चन एक क्रिएट होता है. दूसरी बात ये है कि ये सीरियस थॉट्स जो हैं कभी भी मीडिया और जर्नलिज्म के थ्रू जो हैं वो प्रोपेगेट नहीं होते. फिलॉसफी और दूसरे सीरियस थॉट्स जो हैं जो किसी कौम को, किसी नेशंस को इन्फ्लुएंस करते थे, क्योंकि अखबार जो है वो एक दिन पुराना हो जाए, न्यूज़ या इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी हो जाए तो वो ख़त्म हो जाती थी. तो इसलिए अखबार में लिखने वाले भी वो जो चीज़ फौरी तौर पे अर्जेंसी है जिसमें, सिर्फ वही बयान करते थे. उसमें भी प्रोपेगेंडा और मसाला वगैरह लगा के उसे अट्रैक्टिव बना के करते थे.
एग्जैक्टली यही चीज अब डिजिटलाइजेशन में हो गई है। बहरहाल मैं एग्री करता हूँ जाहिद साहब के आर्गुमेंट से और तारीफ करता हूँ उनकी, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी बातें की। थैंक यू जी राम साहब, थैंक यू जी। डॉक्टर अफशा और फिर साद और फिर डॉक्टर याज कदीर, अगर उनका माइक अब ठीक हो गया। जी डॉक्टर अफशा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जाहिद साहब, थैंक यू शाहिद साहब। काफी राइम है आप दोनों के नाम में, पर वो मुझे भी रियलाइज हुई। एक तो ये कि हम मुकालमा, जो मैं जिस मुकालमे की कायल हूँ उसमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कम होते हैं, और उसमें हम वी ऑल पुट आवर थॉट्स ऑन द टेबल। जिसकी जो ख्वाहिश हो वो वाली सोच उठा के ले जाए, और बाज़ दफा आपकी ख्वाहिश नहीं भी होती और आप सोच उठा के ले जाते हैं, थोड़े दिनों बाद आपको पता चलता है अच्छा बड़े काम की बात थी जो मैं उठा के ले आया था। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो जो अभी तक बात की। मैं दो तीन चीजें सिर्फ मुकालमे में शामिल करना चाहूंगी, और अगर शायद उस पे मजीद तबसरा करना चाहें तो जरूर करें। मेरा ये ख्याल है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस पहले जिस तरह से हो रहा था इंसानी जिंदगियों में, जाहिद ने अपनी गुफ्तगू के दौरान भी उसको एक सदी और चंद साल का सफर बयान किया, और ये जिसको हमने चंद साल कहा है इसको मैं 10 साल कह देती हूँ। मैं 2013 में पाकिस्तान वापस आई थी, और उस वक्त का सोशल मीडिया और आज 2023 का सोशल मीडिया बेइंतहा इवॉल्व हो चुका। ये एवोल्यूशन शायद पहले सदियों में हुआ करती थी, जो कि हमने पिछले 10 से 20 सालों में होते हुए देखी। अब हम इसका हिस्सा कैसे बने इज अ मोर सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। कैसे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माय व्यू। कि हम जिस तरह हर एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में हम यूजर एंड पे बैठे रहे, हमसे मुराद पाकिस्तान एज अ नेशन, हम यूजर एंड पे बैठे रहे, फिर हम यूजर से बायर हो गए, बायर से हम बोरोअर हो गए, और फिर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो ये बड़ा नीट प्रोसेस है जब आप सिर्फ यूजर एंड पे होते हैं और बायर एंड पे होते हैं, और फिर आपके पास रिसोर्सेज कम होते चले जाते हैं, फिर आप उधार लेना शुरू कर देते हैं, और फिर आप फंस जाते हैं। तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि मैं अपनी जनरेशन को वो इंटेलेक्ट दूं कि कैसे इंटेलिजेंटली इस हाइपर कैपिटलिज्म में बोरोअर या लोन सीकर नहीं बनना, आपने अपने लिए कैसे अर्न करना है, और अपना सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है। एक मॉडल जो इस डिजिटलाइजेशन ने तोड़ दिया वो ये है कि इकोनॉमी सर्टेन ग्रुप्स के हाथों में रहेगी नहीं। यू हैव अ ब्रिलियंट चांस नाउ टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पहले तो वो आपको प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनने देते थे, इतनी इतनी पैक्ड चीजें थी कि सोशल मोबिलिटी भी मुश्किल और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी मुश्किल। मुझे ये लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड ने एक गांव में बैठे हुए बच्चे को भी कम से कम अपॉर्चुनिटी दे दी कि ये लो इसका हिस्सा बन जाओ, एंड यू कैन ऑल्सो अर्न, एंड यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर और इवन अ फर्दर डिजिटल क्रिएटर विद दैट। तो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाहिद ये लगता है कि हाउ टू टेल माय पीपल, माय स्टूडेंट्स, माय फेलोज, माय फ्रेंड्स, कि वो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग की टिप हम कहते हैं क्रिएटिविटी। जब आप क्रिटिक कर लें सारी चीज के ऊपर, तो फिर उसमें से क्रिएटिव नुक्ता निकाल लें कि अच्छा अब मैंने इसका करना क्या है। So that's my question on the table. Thank you. So अफशा बहुत शुक्रिया, आपने इस नुक्ते की तरफ इशारा किया। ये डेफिनेटली दिस इज अ होल पॉइंट कि आप सिर्फ यूजर ही नहीं है। लेट्स से यू आर अ कंटेंट जनरेटर, तो जो बेसिक सवाल यही है कि द कंटेंट, व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट सेल्स। क्योंकि हुआ क्या है कि जो डिजिटलाइजेशन से कि एक आदमी जो गांव में बैठा है, he also thought कि how can he create a commodity। तो उसकी commodity क्या है? एक commodity अभी इसका टिकटॉक का लेट्स से सबसे जो पॉपुलर है, जो he is now a multimillionaire, कुबे,
this guy, this refugee in Italy, जो कि अब फिर वो लॉकडाउन के दौरान he started making this gesture, and this gesture became a commodity, and he now maybe is a multimillionaire, and he picked up the trophy of the football of the recent football cup. So this is the question. It's not about that people should not be given the chance to earn money. The question is what you are selling and what content you are giving to the people. So problem for me is that everyone can generate whatever content. हम गली में निकलते हैं, सड़क पे खड़े होकर बंदर का तमाशा भी देखते थे, और वो भी एक एंटरटेनमेंट। अब वही तमाशा जो है, वो तमाशबीन है, वो डिजिटलाइज हो गया। अब आप अपनी गली में कैमरा उठा के फोन पे कुछ भी बनाए, पीपल विल वॉच दैट। अब लेकिन उसकी डाउन साइड ये है कि सारा ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है जो हम सुबह से शाम तक देखते हैं, दे कॉस्ट टाइम। मैं एक काम करने, खुद को एंटरटेन करने के लिए, पहले अगर अपने बोर्डम को खत्म करने के लिए या अपनी उस मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को समझने खत्म करने के लिए मैं किताब उठाता था और मैं पढ़ने लग जाता था। वो नॉवल था या वो डाइजेस्ट था या वो फलसफे की किताब थी या वो उर्दू डाइजेस्ट या कविता डाइजेस्ट था। अब क्या हुआ है कि अब these kind of a contents, the visual contents which are a pleasure content or the easy content, that somehow seeped into my this leisure time, my free time, and now I just play with my phone. I just keep watching these easy soothing videos of other people, and I never have time to pick up the book. So the problem is that people can earn money, and the one who generates the most easiest, simplest, meaningless content earns the most, क्योंकि उसकी audience उतनी बड़ी है, उसका circle उतना ही बड़ा है, then they know that 5 million people watched this girl danced on a wedding show on this मेरा दिल ये पुकारे आजा, and now she is a star overnight. लेकिन the question is कि what art it generated? Did it give something interesting to the human experience? Did it extend something? This content is my question. तब एक छोटा सा डॉक्टर साहब बाद में आते हैं, थोड़ा सा बाकी लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, यकीनन इस पे वापस आते हैं फिर अगले राउंड। जी डॉक्टर सॉरी साद और फिर डॉक्टर यास। जी साद क्विकली अपना क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल टॉक। पहले तो आई थिंक सेल्डम किसी टॉक में ऐसा होता है कि जो पॉइंट्स रिलेट हो रहे होते हैं उनसे आप पर्सनली आप कहते हैं कि आपके क्वेश्चन ही आंसर कर रहे हैं, एंड आई फेल्ट दैट टुडे। थैंक यू फॉर द वंडरफुल टॉक। क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपलिस्टिक सा है और सेल्फिश भी है, क्योंकि मैं अपने आप को तसल्ली देना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी हम ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हम लेट्स से क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, मुझे हमेशा ये डर होता है कि ये क्वेश्चंस और ये डिस्कशंस कहीं फ्यूटाइल तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है ये लाइक जिस तरह एक बोल्डर पहाड़ से नीचे जा रहा है और उसको कोई चीज रोक नहीं सकती और वो बड़ी होती जा रही है, कहीं उस तरह तो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जिस तरह बात की कि अभी ये हाइपर कैपिटल स्टेज है, तो इज देयर अ पोस्ट कैपिटल स्टेज के ये जो टनल है इसके एंड पे कोई लाइट भी है जहां ये सारा रिवर्स होगा? मतलब डिफरेंट आइडिया जनरेट हुए। अभी मैं देख रहा था कि जिस तरह एक एक्सलरेशनिज्म एक आइडिया है मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरीज में, कि जिसमें कहते हैं कि कैपिटलिज्म सेल्फ डिस्ट्रक्ट तब करेगा जब आप इसको एक्सलरेट करेंगे। इस तरह की ऑब्वियसली इट्स अ फ्रेंच थ्योरी। तो व्हाट इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? कि कहीं ये रिवर्स होगा, ये जो हम डिस्टोपिक एज में जाते जा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, इज देयर अ रिवर्सल, इज देयर अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? सिंपलिस्टिक सा क्वेश्चन है, एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल टॉक। Thank you, Saad. I think I will just keep it very short. We don't know. I think it will never reverse, but it may take a very dangerous turn. It will take a turn, but it may not reverse. ठीक हो गया जी। डॉक्टर यास और फिर फायजा और जीबा। जीबा आप हैं हमारे साथ? जीबा काफी देर से वेट कर रही थी। जी डॉक्टर यास। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ। ठीक है जीबा, आपकी तरफ आते हैं फिर डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर यास। अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है क्लियर? जी जी अच्छा जी चले। अच्छा, पहले तो मैं मियां साहब को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस के, बहुत जबरदस्त वंडरफुल टॉक थी और कई दिनों के बाद बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू और टू द पॉइंट फोकस्ड, और जिसमें मैं समझता हूँ कि मैंने काफी कुछ सीखा है इस गुफ्तगू से। और दो तीन जो पॉइंट हैं, और ये गुफ्तगू उस फ्रेम के अंदर रही है जो रहे हैं क्वेश्चंस,
शाहिद साहब ने जो एक क्वेश्चन और उनका रहता है, थोड़ा सा मैं उसको टच करूंगा, लेकिन मैं पहले जो जाहिद साहब ने फ्रेम सेट किया है, और वो बहुत ज़्यादा वैलिड है कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुमायां हैं, जो हमारे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं इन जनरल, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि जो फायदा हो रहा है वो यूं समझें कि एक तरह से क्वांटिटी वाइज आपका फायदा हो रहा है कि आपके पास पहले दो चीजें थी, तो अब आपके पास 10 की एक्सेस है, लेकिन वो जो क्वालिटी का आप नुकसान कर रहे हैं साथ में, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी का ग्रेजुअली जो नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर शायद अभी तक हमारी उस तरह से नजर नहीं पड़ी है। मैं उस गुफ्तगू को थोड़ा सा समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इससे पहले रही है। तो जो लिटरेचर में हम देख रहे हैं कि मीडियोक्रिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि वो जो डोपामीन इफेक्ट है जो मियाँ साहब बात कर रहे थे, वो वाकई बहुत ज़्यादा प्रीवेलिंग है। और उसके साथ हुआ ये है कि अभी आप यूएनओ की रिपोर्ट देखें, 2-3 आई हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो फास्टेस्ट इस वक्त ग्रोइंग इश्यूज हैं दुनिया के, उसमें मेंटल हेल्थ का सबसे नुमाया एक इशू अब ह्यूमन बीइंग्स में होने जा रहा है। और उसके पीछे ये वाला जो इफेक्ट है, और उसके साथ जो नार्सिज्म का एलिमेंट है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो ह्यूमन सेंसिटिविटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यंगस्टर्स में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कमेंट्स के हवाले से। इससे पहले ऐसे नहीं था। हम अपने बचपन में देखते थे कि चूंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कॉम्पिटिटिव होता था, कि आप जब तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं तो आप थोड़े से नर्व्स आपके स्ट्रांग होते हैं, लेकिन चूंकि अब ये डिजिटलाइज इंटरेक्शन है, तो इसके अंदर जो सेंसिटिविटी का एलिमेंट है रिलेशंस में, वो हद से ज़्यादा फैल गया है। और ये जो नार्सिज्म का एलिमेंट है, उसकी वजह से जो इश्यूज हैं, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा नुकसान है इस वक्त हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने बहुत जिस इंटरेस्टिंग इशू के ऊपर अभी शायद बात नहीं है, मैं एक कमेंट, मैं एक एक जो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर शायद साहब ने क्वेश्चन किया था कि जो इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स का ये सिचुएशन है, क्या इसने उसको कंट्रीब्यूट किया है या वो वॉल्यूशन कम हुई है। मेरे ख्याल है इस टॉपिक पे अब बात हुई, मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट कर दूं कि क्योंकि इनसेंसिटिविटी भी बढ़ गई है। ये जो अभी मियाँ साहब ने जिक्र किया था कि एक खबर आ रही है खुशी की साथ में दुख की, उसका हुआ ये है कि जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है टुवर्ड ट्रेजेडी, वो सेंसिटिविटी ओवरऑल कम हो गई है। और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो वायलेशन है, आप देखें आपके सराउंडिंग में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल इंटरेक्शन इंसानों के साथ नहीं रहा, तो सारे हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। आप देखें कि सोशल वेबसाइट्स के ऊपर शोर ज़्यादा मचता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोटेस्ट की शक्ल में या जो ह्यूमन कनेक्शन की सूरत में जो एक प्रेशर होता था हाई अप्स के ऊपर, वो कम हो गया है। अब जो प्रेशर है वो सिर्फ इतना ही है कि अच्छा ट्विटर पे क्या ट्रेंड बन गया है या फलां, लेकिन जो रियल टाइम प्रेशर सोसाइटी के अंदर डेवलप होता है, वो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हुआ है। और उसकी वजह से जो पावर्स पहले पावरफुल थे, अब उनके पास एक तरह से अनलिस्ट पावर है। यानी आपके पास एक जो कर्सिव एक वे होता था चीजों को रोकने का, मुझे लगता है कि वो गैप पैदा हो गया है। ह्यूमन वॉल्यूशन की सूरत हाल ज्यादा खराब है। आई स्टॉप माई कमेंट्स हियर, सॉरी मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 बातें इस पे करना चाहूंगा। इस पे हम एक घंटे का सेशन कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने जो रेज किए, और इसी की मैं तवक्को कर रहा था कि गुफ्तगू इसी तरह आगे बढ़ेगी। अब मसला ये है कि जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि ये जो सारी सोशल मीडिया एक्टिविटी है या डिजिटल स्फीयर में जो हम बात करते हैं, इट्स नॉट इन अ वैक्यूम, इट हैपेंस विद इन दिस सोसाइटल फ्रेमवर्क। जब होता क्या है कि जब इंडिविजुअल को ज्यादा फ्रीडम मिलती है एक्सप्रेशन की, that does not happen at the cost of the state, or at least it is not happening at the cost of the state authority. अब जो स्टेट है, खा वो अमेरिकी स्टेट हो या पाकिस्तानी स्टेट हो या किसी भी और मुल्क की, उसके अपने सोशल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो है दे आर इंटैक्ट। अब कोई भी फर्द जब बियॉन्ड द अलाउड स्पेस स्टेप आउट करता है, तो स्टेट फॉरन उसके अगेंस्ट सॉलिडिफाई हो जाती है। देन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि आज़ादी इजहार के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दे बिकम काइंड ऑफ हंटिंग ग्राउंड्स फॉर दीज पीपल।
अब 9 मई के वाकया पाकिस्तान का हो अभी रिसेंटली, या वो कैपिटल हिल में अमेरिका में ट्रम्प के सपोर्टर्स का धावा बोला जो उन्होंने, उसके बाद स्टेट आल्सो टुक द सिमिलर एक्शंस अगेंस्ट दैट, क्योंकि स्टेट वांट टू रीइंफोर्स इट्स सॉवरेनिटी, और दे डिफाइन व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड, व्हाट इज फिल्टर्ड आउट, व्हाट इज नॉट। अब क्या होता है कि डिसेंसिटाइजेशन इज द सेकंड थिंग जो आपने पॉइंट रेज किया, कि इस सारी फ्रीडम में जो हम समझते हैं कि हमें फ्रीडम मिल रही है, तो जो शाहिद साहब का ये सवाल था कि ये बेटरमेंट के लिए है या इट इज फॉर समथिंग एल्स, तो आई थिंक अपरेंटली, सो ऑफ कोर्स हर चीज में से कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव पहलू निकल आते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन पहले मुझ तक नहीं थी, मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात जो सोशल मीडिया ने प्रोजेक्ट किए वो उसके अच्छे नताज निकले हों, और कोई ऐसा आदमी जो कहीं ओप्रेस्ड है, वो कहीं किसी अथॉरिटीज तक उसकी खबर पहुंच गई और उसे कोई रिलीफ मिल गया। इंसिडेंट्स आर हैपनिंग लाइक दैट, होते हैं चीजें, लेकिन इन पैरेलल जो सारा बाकी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, दैट somehow does not lead to any positive outcome. उसमें एक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड, इंडिविजुअल इज kind of fully put out। अब एक आदमी आपके पीछे कैमरा लेके अगर हर वक्त है, और आप कम गली में जाते हैं तो एक कैमरा आपकी फोटो ले रहा है, आप बाथरूम में जा रहे हैं तो वहां कैमरा लगा है, एक पब्लिक स्पेस में जाते हैं तो वहां कैमरा लगा है, तो बिग ब्रदर इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू एंड यू हैव नो एस्केप। और अगर उसके नतीजे में आप कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जो आपकी पर्सनल ओपिनियन है, जो एक रिबेलियस एक्ट है, और आपको लगता है कि वो रिबेलियस एक्ट विल मेक सम पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, बट द बिग ब्रदर द स्टेट वो उस रिबेलियस एक्ट को अपने लिए एक थ्रेट समझती है, तो देन यू हैव नो वे टू हाइड, देन यू विल नॉट हैव एनी स्पेस। और जो व्हाट हैपन इन चाइना, अब कोविड की जो पॉलिसी में एग्जैक्टली यही हुआ कि चाइना इज सच ए सर्विलेंस सोसाइटी। लोगों ने क्या किया कि द बेस्ट वे टू प्रोटेस्ट इज टू हैव अ ब्लैंक वाइट शीट ऑफ पेपर, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स हैं they pick up the keywords when people send messages through WeChat or या किसी भी social media के through to integrate, to criticize or to show dislike. तो state के जो algorithms हैं, they pick up all those keywords and they block those type of information to be communicated, to be spread out. So the white paper cannot be interpreted by this AI driven algorithms. So that metaphor kind of became a message. So in this way, you have to be inventive, you have to be creative, but there is always a chance, this chance can turn against you, this chance can turn in favor of you. Of course, there is no denial, we cannot say that we should stop all these things, but at the same time we should be aware that this social media, this overexposure is blinding. We apparently see that we have now everything is brightened up, there is no secrecy, there is no opacity in that, everything is shown, but a little bit of a light exposes things, make things visible, but too much light, overexposure blinds you again. It's like coming in front of the car headlights at the midnight, so that you also don't see anything, and that is exactly happening. It is overexposure which is blinding again. So one should be informed how much should be the intensity of light to keep things visible. ठीक। जी जीबा, जीबा। जी मेरा ख्याल है मुझसे पहले फाइजा अतीक का हाथ खड़ा हुआ था, सो इफ यू कैन अलाउ हर सम ठीक है टाइम दैट्स फाइन। जी फायदा, जी फायदा। फायजा नहीं है जीबा, जीबा आप करें, फायजा नहीं है वो, जी उनकी आवाज। अच्छा, मेरे पास मैं आई जस्ट कीप इट वेरी शॉर्ट। आई हैव टू क्वेश्चंस, एक जरा सीरियस क्वेश्चन है और एक इतना सीरियस सवाल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी इम्पैक्ट करता है हमारी सेंसिटिविटीज को। जो पहला जो सीरियस सवाल है वो ये है कि हमारा जो एक ह्यूमन कंट्रोल, क्योंकि मुझे पता है ये एक तरह की एक और सिविलाइजेशनल ईथोस क्रिएट हो रही है with the coming of artificial intelligence, और artificial intelligence किसी न किसी तरीके से हमें
कंट्रोल कर रहा है, इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ों पर हमारी रिलायंस उसके ऊपर बढ़ गई है। कोई भी चीज़ आपने क्रिएट करनी है, रिसर्च लिखना है, जो कुछ भी करना है आपने, और इवन तो यहाँ तक कि वर्डिक्ट्स वगैरह भी अब लिखे जा रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया है। तो माय क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड इज कि ह्यूमन कंट्रोल किस हद तक अभी लूज हो चुका है विद द कमिंग ऑफ दिस न्यू डायमेंशन। जो दूसरा जो मेरा एक सवाल है, क्योंकि मुझे खुद भी लिखने का कुछ शौक है, पोइट्री वगैरह का। पोइट्री वगैरह जब मेरे पास आती है तो मैं बहुत जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाती हूँ। और कुछ ही रिसेंटली मुझे किसी ने खत किताबत की तो मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हो गई उसकी लैंग्वेज से, उसकी पोइट्री से एंड एवरीथिंग। बाद में पता चला जनाब कि उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से उन्होंने वो सारी पोइट्री जनरेट की हुई थी जो कि मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। तो उस हवाले से अब जाहिर है कि वो तो चीज़ें हमने तो हंसी मजाक में उसको उस वक्त ले लिया, लेकिन मुझे फिर बाद में ख्याल आया कि ये तो वाकई में हमारी एक तरह से जो रिलेशनशिप बिल्डिंग जो होती है, जो सोशलाइज, क्योंकि हम पहले एक ज़माने में मेहनत करते थे, खत किताबत का जब करते थे हम लोग तो ओरिजिनल पोइट्री लिखते होते थे, शेर व शायरी कर रहे होते थे, हमारी सोच जो थी वो बहुत ओरिजिनल होती थी। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि एक चांस शायद यहाँ पर बन रहा है कि ह्यूमंस एंड मशीन का जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है कि शायद वो भी एक तरह से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि द मशीन्स सीम टू बी टेकिंग ओवर द ह्यूमन माइंड, और ह्यूमन माइंड एक तरह से इररेलेवेंट हो रहा है। सो दीज आर द टू ऑब्जर्वेशंस। मैं जाहिद साहब से उनके ओपिनियन भी चाहूंगी और उनके रिस्पॉन्स भी चाहूंगी। थैंक यू। This is super interesting. I am very happy to hear that कि हम ये गुफ्तगू में लेके आए ये। मैं इस पे सोचता रहता हूँ, और मेरे ख्याल में जो पहली बात है आपकी कि जो AI is involved in decision making or AI involved in writing a creative text, I think they both are kind of similar activities. Basically what is happening कि जितनी भी machines हैं, खा वो पुराने दौर के लकड़ी के कैलकुलेटर हों जो सबसे पहली इजाद थी, या वो अब AI driven models. Basically this is an extension of human brain. We outsource the activity to an kind of a automated machine जो काम हम खुद से कर सकते हैं, चूंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि it takes 2 years to solve a problem. लेकिन we have now machines which are feed in by certain kind of equations and algorithms जो they will do this repetitive action. अब क्या हुआ है कि a calculator will always calculate a certain numbers. A computer can always give you certain type of answers. Lekin with this artificial intelligence, with this machine learning, with deep learning, a new thing happened. It basically is a pattern recognition model. It generates the patterns based on the statistical analysis, or statistical analysis gives you certain possibilities. And then all these possibilities, all these patterns which exist in possibility are kind of something which human mind will also do. So human brain also does the same. हमारे पास experiences हैं, memories हैं, thoughts हैं, emotions हैं, feelings हैं, उन्हीं की बेस पे हम चीज़ों को reprocess करते हैं, सोचते हैं, और कुछ ना कुछ नताज जन्म लेते हैं उस सोच के नतीजे में, और these are our conclusions. So basically these machine learning models are also doing the same. However, the limiting factor here is कि machine generates certain patterns which are finite. Okay, तो मैंने अगर 1000 data points दिए एक सॉफ्टवेयर को, एक एल्गोरिथम को, और उन 1000 data points के वो डिफरेंट तरह के combinations जनरेट करेगा, और मुझे उसके maybe 50 possible solutions देगा. उसमें से maybe 30 solutions will be absurd, but 20 solutions may be viable. Or maybe human mind, every individual cannot come up with the 20 new ideas out of those 100 data points. The machine is outsmarting human being. That is what is happening. And then whatever Will the it machines generates, reciprocate? Will the machines reciprocate human emotions? it will, emotions, I don't know, but maybe it also starts reciprocating emotions. How will it do that? This is apparently is a mammoth task, but it is not impossible task.
क्योंकि what are the emotions? The emotions are, I mean, it's now in parallel, the big debate is going on, what is consciousness and what is feelings, what are emotions. These are all very biological outcomes of human brain or animal brain or any brain of a living being. Because human brain, again, have this neurons which are just shooting in our brain, creating different combinations. We think and come up with a new idea. We come up out of the box ideas. Machines somehow so far cannot go out of the box. They stay within the box. So let's say what is happening, this called the self-learning algorithms. When they generate this output, then they use the same output to reinforce. They do the loops of millions and millions of reiterations. So one decision or one output becomes the input for the next reiteration. And in this way, it self-evolves. That's why the machine learning model, somehow we call them self-learning robots. कि आपने एक machine बनाई है और within 2 hours, the machine will start recognizing difference between red and blue, blue and black. It can walk, it can tell you this is a road or this is a forest or this is a field. The self-driving cars, they have the sensors. What these sensors do, they know, okay, the next object is coming in front of me. It is a child, I should put the brake. And or it is a kind of a stone, I don't care, I can ride over. And this decision making is based on this constant reiterations of the data, which is so basically machine is thinking. It is a thinking machine. That's what we do. We also think all the time, okay, we should not go this way. A guy was robbed on this road. Next day, we don't go there. Machine will also do the same. And if it is driven by emotion or rationality or combination of both, the machine may also start replicating the same emotional things. So this is a matter of time and see how things go. But I again would say out of the box thinking is possible. But what will be the form, what will be the shape, that we have to see. And human being is also evolving. We are not kind of a static beings. No? We are generating those machines. So if we give this possibility to a machine to come up with a novel new outcome, like writing a poem or making a painting, in the end, everything is a combination, a combinatorial pattern. Everything is reduced to pattern. If it is a poem, it's a pattern of words. It's a syntax. You combine words in a certain pattern, you make a sentence. You rearrange them, you make it absurd. So machine can also learn that these words can be recombined in a way. I mean, what your DeepL writing software. So the DeepL is a software which was used for translation, and now they introduced DeepL Write. Then you write a sentence, it tells you what is a better form or grammatically correct form of that, or Grammarly. These are we commonly using to improve our language. If it can tell us what is a correct way to write an English sentence or Urdu sentence, it can also tell us what is the right way to say a very emotional thing to a girl, or how to say this sentence to your father that he likes you more. So these are also driven by emotions. So maybe these things will just happen. And also in the end, I think I don't care about if a poem written by a machine or a man. In the end, if this text, regardless of its creator, gives me something pleasant, something interesting, something new, which I never felt or thought before, for me, I don't care. I just like to see that experience being transmitted and transformed and shared. I never met Mir Taqi or Ghalib. I don't know who wrote this verse, but I still read the verse and like it. So in the same way, I think, yeah, this marriage of machine and man is already happened. ठीक हो गया। जाहिद 2 क्वेश्चन और हैं, बल्कि 3 आ गए। एक तो फायजा बड़ी देर से, और उसके बाद डॉक्टर इरम और फिर निसार जी। फायजा। और ये 3 जाहिद आपने बात की थी डोपामिन। जी 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 बोलिए। सर जाहिद ने बात की थी डोपामिन सेंटर्स की। एज अ फ्रीलांसर मुझे टेक्नोलॉजी इसका अंदाजा तो है सोशल मीडिया हमारे लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन मैं एज अ फिजियोलॉजिस्ट मैं ये डरती हूँ जिस तरह हमारे डोपामिन सेंटर्स बढ़ गए हुए हैं ना सोशल मीडिया यूज कर करके, हमें एकदम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना मिलती है, हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें छोटी छोटी चीजें खुश नहीं करती और हम डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं। तो हम इन चीजों के साथ कैसे कोप अप कर सकते हैं?
या हमें ऐसे ही अब गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि हम आदी इतने हो गए, हमें शुरू से ही एक्सपोजर इतना है सोशल मीडिया का हमारी जनरेशन को। तो प्लीज जरा इसमें हमारा थोड़ा सा ना गाइड कर दें हमें। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा। यही आई थिंक इस सारी गुफ्तगू का है कि वी शुड रिफ्लेक्ट। हमें सोचना चाहिए कि किस तरह हमें खुद को सेंसिटाइज करना है और हम इन्फॉर्म्ड रहें कि हो क्या रहा है। इस सारी लाइक दिस शॉर्ट टर्म प्रेज, इमीडिएट रिस्पॉन्स के जो कॉस्ट है वो यही है कि वी आर बिकमिंग सो डिसेंसिटाइज्ड। और बिगेस्ट क्राइसिस अभी उन्होंने बात की थी कि जो यूएन के पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक loneliness, depression, mental health issues are one of the most emerging diseases, and they are the outcome of this constant presence. We are never offline. We are always connected. Phone, laptop, wherever we are, we first try to find the internet connection. We have to go offline to calm down. It's like smoking, when we smoke too much, then we are suffocated. Then we should stop smoking. The same way, we should stop being online all the time. It's distraction. We cannot see that, like attention deficit. हम 2 घंटे, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सोशल मीडिया का फ्रीक्वेंट यूजर 2 घंटे बगैर अपने फोन को चेक किए एक किताब पढ़ सकता है या कोई एक्टिविटी कर सकता है। दिस सर इज अ एज अ न्यू कांस्टेंट जनरेशन, सॉरी मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? एज अ न्यू जनरेशन अगर हम देखें, हम अब मैं ये सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं शॉप पे और जाके बाय करूं बुक, मुझे तो मोबाइल में फ्री मिल रही है, मैं वहीं पढ़ एग्जैक्टली। लूंगा। और जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे साथ साथ व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, मुझे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, तो मुझे तो एक टाइम में बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मुझे क्या जरूरत है मैं पेजेस वाली बुक पहले खरीदूं फिर पढूं? तो हमारे लिए ये चीजें ना, हमें लगता है जैसे अनरियल सी चीजें हैं कि मैं शॉप पे जाऊंगी, बुक सिलेक्ट करूंगी और फिर खरीदूंगी। तो हम एज अ लेयर टाइम हम बुक रीडिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो वो भी हम मोबाइल पे कर रहे होते हैं। लेकिन अब मुझे ना थोड़ी सी वो घुटन सी फील होना शुरू हो जाती है कि क्या हर टाइम, पहले मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, फिर अपना लेयर टाइम भी इसी पे गुजार रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे हर टाइम हम एंग्जाइटी वाली स्टेट में रहते हैं और डिप्रेशन वाली में। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। मेरा भी ओपिनियन ये है कि बेशक आपको फ़ोन पे सारी सारी मालूमात मिल जाती है और मुफ्त मिल जाती है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन है, जो अ, वो आपकी तवज्जो को, आपके फ़ोकस को मुतासर करती है और यकीनन करती है। और ये जो प्रोसेस है किताब खरीदना, किताब पेपर से पढ़ना, ये बेसिकली इज़ एक्टिविटी फॉर डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। और ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा। जब आप किसी के साथ मुकालमा करना चाहते हैं, किसी शख्स के साथ, या इम्पोर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें कुछ सीरियस कंटेंट हो, तो फिर आप चौक में बैठ के नहीं करते। यू गो टू अ क्लोज रूम where there is no distraction. And now we somehow forget to go to a closed room when we want to reflect. Because the problem with social media is that it does not give you a chance to reflect. It just pushes you to act, constantly act. It's a one directional action. For learning, Yes. we need reflection. And that happens when you are detached from this phones and all that. अच्छा जाहिद, यार मेरा ख्याल है अब हमें भी जो आप कह रहे हैं ना ऑफलाइन जाना चाहिए। तो 2 सवाल हैं, क्विकली हो लेते हैं, उसके बाद ऑफलाइन जाते हैं। इरम कीजिए, डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन कीजिए अपना, और फिर निसार साहब का क्वेश्चन वेरी क्विकली, और फिर हम ऑफलाइन जाते हैं। जी इरम। थैंक यू डॉक्टर साहब। राइट साहब, मैं ये सोच रही थी जब आपने शुरू में स्पैम और मैसेज का जिक्र किया, तो मैं सोच रही थी मेरी लोकल जो मेरी रिसर्च है, तो मैंने कॉमन मैन को ऑब्जर्व किया है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत, यहाँ पे सोशल कोहिजन नहीं हो जाता ना, ये स्पैम की तरह मुझे लगी है जैसे आपकी बात। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हाइपर इफेक्ट जो है इसका मीडिया का, ये हमारे जैसे सोसाइटी में ज़्यादा हो सकता है, या जैसे आप दिल्ली में रहते हैं वहाँ पे रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इतना नहीं होता, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा या हो रहा होगा? थैंक यू। आपकी आवाज टूट रही थी। अगर मैं आपकी बात पूरी तरह समझ पाया तो आप कह रही हैं कि ये हाइपर कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है आपसे कुछ? मैं ये कह रही हूँ, अब आ रही है आवाज़? हेलो, मुझे आवाज बोलिए, आपकी आ रही थी, लेकिन मुझे भी नहीं नहीं सुनाई दिया। इरम बोलिए जरा दोबारा, क्या कह रही हैं आप? मैं थोड़ा पंखा बंद कर
हाँ, आई थिंक बीच में कोई ऐसी चीज है जो आपकी आवाज को डिस्टॉर्ट करती है। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने शुरू में नासिर का मैम का जिक्र किया था, तो मेरी चूंकि लोकल हिस्ट्री पे रिसर्च है तो मैंने कॉमन मैन को काफ़ी ऑब्जर्व किया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे यहाँ सोशल कोहेजन बहुत कम है और रूल ऑफ लॉ बहुत कम है। तो जो आप ये डिजिटलाइजेशन की जो हाइपर इफेक्ट्स हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हमारे जैसे सोसाइटी पे ज़्यादा होते हैं या जैसे आप जर्मनी में रहते हैं जहाँ पे सोशल कोहेजन है या रूल ऑफ लॉ ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है, ये मैं पूछना चाह रही हाँ, आई थिंक बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसके इफेक्ट हर जगह हैं, क्योंकि जो भी यूजर है वो इस मीडियम के साथ इंटरेक्ट करता है और मीडियम उसके ऊपर असरअंदाज होता है। तो यहाँ पे कुछ और तरह के सोशल मीडिया के चैनल्स पॉपुलर हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे यूजुअली प्राइवेट इंफॉर्मेशन लोग कम शेयर करते हैं। पाकिस्तान में लोग अपनी विजिबिलिटी के लिए या वैसे ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारा प्राइवेट कंटेंट शेयर करते हैं, और इवेंचुअली all that private content somehow has some presence, it does not disappear, और वो आपको नफसियाती तौर पे तो मुतासर कर ही रहा है, आप बेशक कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो it somehow works in a similar fashion at both places। उसके आउटकम्स मुख्तलिफ होंगे, चूँकि आपका जो रियल सराउंडिंग है वो मुख्तलिफ है, आपके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ हैं एक मुल्क में और दूसरे मुल्क में। तो आई थिंक उसके आउटकम्स शायद मुख्तलिफ हों, लेकिन व्हाट हैपन्स टू योर ब्रेन, योर पर्सनालिटी, योर बॉडी, आई थिंक दैट इज मोर और लेस द सेम। जी निसार साहब, निसार, आर यू देयर? यस सर। निसार, बड़ा क्विकली क्वेश्चन, डायरेक्ट सर क्वेश्चन और सर शॉर्ट डायरेक्ट। सर दिस इज द लास्ट जाहिद क्वेश्चन। साहब बहुत शुक्रिया, जाहिद साहब बहुत शुक्रिया फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। जाहिद साहब मेरा क्वेश्चन है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो आपने बात की बहुत सारी, अच्छा इसने जो है हमारी सोसाइटी को, इकोनॉमी को, जिसको आप कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को बहुत हद तक इसने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है और इसके डायनामिक कंप्लीटली चेंज कर दी। अच्छा इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी एकेडेमिया के ऊपर, खास करके रिसर्च के ऊपर, और वो रिसर्च जो मेडिकल साइंस या डायरेक्ट ह्यूमन की जो है वो हमारी साइकी से रिलेटेड है और हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो किस हद तक किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं और कैसे इफेक्ट कर सकता है हमारा जो एक नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस होता है, जिससे एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के जरिए आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं, जिसमें हमारी 5 या 6 सेंसेस इवॉल्व होती हैं, तो वो तो सारी चीजें हम फिर साइड पे रख देंगे और फिर एक नई सारी आर्टिफिशियल लाइन में लग जाएंगे, तो वो कैसे इस पूरी चीजों को जो है एज ए ह्यूमन सोसाइटी को जो है वो इफेक्ट करेगा? पहले तो मुझे खुशी है कि निसार की शक्ल देखने को मिली है अब 2012-13 के बाद। आई थिंक तुम चले गए थे कॉलेज और गायब हो गए थे तो सॉरी। तो जाहिद, पहले तो शायद आपकी शक्ल देखने के लिए साजिद साहब ने भी आना था, पता नहीं वो आए हुए हैं। साजिद जायफोन पता नहीं वही है, अब चूंकि उनका कैमरा ऑन नहीं है। वो कह रहे थे मुझे इससे पहले कि यार बड़ी देर होगी जाहिद को देखे हुए। सर मैं आया हूँ, मैं सुन रहा हूँ। यार नजर भी आ जाए, जाहिद भी देख ले आपको, साजिद साहब क्या कहते हैं? हद हो। सही। आप तो चिलमन से लगे बैठे हैं। मैं तो अंधेरे में बैठा हूँ सर, मैं सिर्फ सर की टॉक को एंजॉय कर रहा था सर। नहीं, अच्छी बात है। निसार अच्छा, का निसार क्वेश्चन की भी बड़ा अच्छा था जाहिद। निसार की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये सारी जो रिसर्च है, खास तौर पे एकेडेमिया में, वो मेडिकल साइंस की हो या वो किसी भी और शोबे की हो, आई थिंक दैट इज वेरी रेवोल्यूशनरी, और इससे बहुत कुछ मस्बत हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द साइंस, मेडिकल साइंस। खास तौर पर अब जो तुम देख रहे होगे कि बड़ा तेजी से इमर्ज कर रही हैं ये फील्ड्स, रिमोट ऑपरेशंस के, मेडिकल ऑपरेशंस एंड डॉक्टर्स एक कैलिफोर्निया में बैठा है और वो अलाइड अस्पताल लाहौर में रिमोटली ऑपरेट कर रहा है और पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल without all these very well precisely controlled models and algorithms जो कि रियल टाइम में एक्ट को एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करते हैं, या इन टर्म्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी बेसिकली
अब हमारे साथ ये हो रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ और कुछ लोग जो मेरी कोलैबोरेशन में है वो मेडिकल साइंस में भी काम करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू ड्रग्स, दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी फास्ट पेसिंग फिनोमिनन। कि फॉर एग्जांपल कैंसर या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या कोई भी और तरह की क्रोनिक डिजीजेस हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती हैं, उनके लिए यू नीड न्यू मेडिसिन। जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं दे डू नॉट वर्क, और एंटीबायोटिक्स प्राइमरीली, क्योंकि हमारी जो अब इम्यूनाइजेशन हो रही है और दवाइयाँ काम नहीं करती, इतनी ओवरडोजिंग हम करते हैं, या बहुत सारी ऐसे डिजीजेस हैं जो ट्रांसफॉर्म होती हैं, जो जेनेटिकली म्यूटेट होती हैं, जैसे वायरसेस हैं। तो टू कोप अप विद दिस पेस ऑफ न्यू डिजीजेस, आई थिंक यू कैन नॉट डू इन दिस क्लासिकल वे। अगर आपने इंस्टेंटली ट्रबल शूट करना है किसी भी नई डिजीज को, और उसकी बेहतरीन मिसाल, आई थिंक दिस हैपन वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री कि कोविड आया, विद इन 1.5 year वी हैड अ कोविड ड्रग। एंड आई थिंक इस एक्सपीरियंस के बाद जब अगला वायरस आएगा इस तरह का जो कि पेंडेमिक होगा, वी विल मेक अ मेडिसिन मे बी विद इन 6 months और सो। और हाउ इट इज हैपनिंग, उसके पीछे जो सारे जो ह्यूमन नॉलेज है, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, जो बायोलॉजी है, that is reinforced by this machine learning, by this artificial intelligence, कि जो चीज हम कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं combinations of atoms and molecules to make a drug that is so much accelerated, वो ड्रग जो पहले लेबोरेटरी में साइंसदान काम करते हुए मैं भी 6 महीने में डिस्कवर करेंगे, नाउ वही चीज आप 1-2 हफ्ते में डिस्कवर कर लेंगे। वो क्या होगा कि आपने लेट्स से 5000 कॉम्बिनेशंस हैं एक रिएक्शन के, एक रिएक्टेंट के और दूसरे रिएक्टेंट के साथ, तो उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनेगी। अगर आप एक स्टूडेंट को देंगे ये काम, तो वो 5000 रिएक्शंस रन करने के लिए उसके 2 साल लगेंगे, उसकी पूरी पीएचडी इसी में गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप वो एक रोबोट को देंगे, वो सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी के 5000 कॉम्बिनेशंस बनाएगा और आपको वो सुबह तक उसकी 5000 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और आप उसको स्कैन करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन कौन सी जो है वो राइट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ है। तो दैट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटिंग सो फास्ट। तो दैट डायरेक्ट इम्पैक्ट, दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट ना, जैसे उन्होंने बात की थी आना ने कि व्हाई डोंट वी सी द पॉजिटिव साइड, बट दिस इज अ पॉजिटिव साइड। बट then again we should be very careful okay what is happening on the darker side of that, behind the curtain, the backstage पे क्या हो रहा है, we should keep an eye। तो अब एक और छोटी सी मिसाल दूं, वैसे वक्त कम है। अब एक मैं देख रहा था कि जो डॉक्टर्स हैं दे कलेक्टिंग। जाहिद तुम्हारे वक्त का ख्याल कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया था शाम आपके लिए ये मेरी। ठीक हो गया। तो anyway, बहरहाल इस पे लंबी बात है, कभी बात होती रहेगी फिर। आई एम एक्साइटेड टू एक्चुअली टॉक ऑन दिस टॉपिक। हाँ ठीक ठीक है। नहीं करें बात, आप जो छोटी सी बात कह रहे थे। तो बहरहाल एक और दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो है वो एक्सरेस लेते हैं आपके लंग्स का, एक अस्पताल में हजारों सैकड़ों एक्सरेस इकट्ठे होते हैं डेली के। अब वो क्या करते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक मशीन लर्निंग में एक है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क, एक मॉडल होता है, उससे वो पैटर्न रिकॉग्निशन करता है। अगर वो उसको आप लाखों एक्सरेस देंगे और उसमें से वो ट्रेंड जनरेट करेगा कि दिस इज अ हेल्थी लंग एंड दिस इज अ डिजीज्ड लंग। जो पेशेंट आएगा वो अपना एक्सरे लेगा, डॉक्टर से ज्यादा वो सॉफ्टवेयर जो है वो ज्यादा प्रिसाइजली डिटरमिन कर सकेगा कि दिस इज नॉट अ हेल्थी लंग, इसमें कोई मसला है, इस फेफड़े को चेक करो। So that's how it is affecting and making things more like quick, and the discovery of a drug solutions. Yeah, that's how it is working. ठीक हो गया। तो जाहिद क्या मूड है, बैठे हैं अभी या ऐना ने फिर हैंड रेज किया है, तो या हम उस पे मेरा ख्याल है आना, हाँ आना की बात खत्म करके तो फिर हम खुदा हाफिज कहते हैं। ठीक है ऐना बेटा करो बात। थैंक यू। अभी तक बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। आई थिंक द पॉइंट दैट वी डिड नॉट कवर इज द डिस्पैरिटी, जिसकी शुरू में अंकल ने बात की थी कि डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर और इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट health sciences. I have a smart watch that tells me मेरा heart rate कितना है, how many steps I have taken.
I told in the beginning that this is my process of detachment, that I go to the gym, do weightlifting and stuff like that. So I kind of, check that. I know that the watch that I am wearing, it's an athletic watch, and watch banane wale bhi are collecting my data. But this is actually giving me the sense of my health and well-being as well. So it pokes me every hour that I have to take 250 steps and stuff like that. तो इस तरह की चीज़ें जो जिनके ऊपर मेरी एक्सेस है, और आई कैन बी थॉटफुल रिगार्डिंग माई हेल्थ, और जो एक गांव में बैठे हुए शख्स के पास नहीं है, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी ने ये डिस्पैरिटी क्रिएट की है? किसी के घर में एसी है, किसी के घर में एसी नहीं है. तो ऑल दीज थिंग्स, हाउ वी नीड टू बी very mindful of that. और सेकेंडली वही क्वेश्चन है कि दिस इज ऑल टॉक्स एंड आई हैव indulge into a lot, and I know कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्या चीज़ जो है ना वो मेरे लिए नुकसानदेह है. So how to train human minds कि because एक किताब है तो हर किताब भी अच्छी नहीं होती. You don't read every book. You don't read a Yes. third grade novel and be like, I am reading and I am detaching myself from social media. So how to create that awareness कि हर किसी को पता हो in order to not be a product. Thank you. This is super interesting topic. I think हमें इस पे बात करनी चाहिए. और I think this is for me, मैं इसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देखता हूँ. It is not for me primarily, it is not a matter of access or non-access. मेरे नज़दीक, I think I am more critical, and I can also afford a watch, this smartwatch, but I consciously do not do, because this is on one point, if it is giving me all the indicators of good health, but at the same time, it is so intrusive. It knows everything about me, which even I don't know. So for me, I'm very critical. Okay, my watch is kind of a more informed than my own mind. So I have this very conscious decision. मैं जब भी कोई ऐप डाउनलोड करता हूँ, so I always go to the cookies and disallow the unnecessary cookies. Because why third party should know everything what I do, what I watch, what I so for you may find it beneficial that you have kind of a secretary, a personal secretary who reminds you for good things. But I also see that as kind of a breach of my privacy at the same time. And for me, the problem is the downside. I might be more pessimistic in that, and I am quite pessimistic in that. Okay, I do not want someone else to give control of my being, because इससे होगा क्या कि someone will constantly tell me what is good for me, who is sitting so remote and has a full access, and it will start selling me products which are good for my health. Then they will get money from a pharmaceutical company who will recommend me a certain, let's say, multivitamins, which I will, because I'm already given up all my control to this company who knows better what is good for my health, for myself. And then these pharmaceutical companies will make you experimental laboratory rat, will do experiment all kind of things on you. So I don't want to be turned into an experimental rat. I give you a personal example. हमारी एक दोस्त थी, वो Amazon, उसने अपना अकाउंट खोला, and she immediately saw the advertisement for baby clothes. I mean, over the night, why this kind of a new advertisement is appearing? And then somehow she overlooked that, and after 1 week, she realized that she might be pregnant. And then she did the pregnancy test, and she was pregnant. How Amazon knew before even her that she is pregnant? Because she was texting with her boyfriend, or maybe having a kind of a more intimate nights in the struggle to get pregnant. And all these data was being read by these third parties, and then they started. I mean, I also give you, my child was born, और जिस दिन हमारा बच्चा पैदा हुआ, मैं अस्पताल में था, मैंने Amazon खोला, कुछ चीज ऑर्डर करनी थी, and it gave me the advertisement of quantum mechanics for babies. Why quantum mechanics for babies now? Because they know I'm in hospital, my wife is admitted, I do physics, I download papers for physics, and then they created this kind of a combinations and then started advertising that type of products to me. It's so intrusive. This is surveillance capitalism. I want my privacy as well. So this is how I see it. I don't want to be told by a secretary, watch
that what is good for Yeah. me. That's what I was saying, how to be mindful of that. This is what we have to train ourselves. Yes, so constantly reflecting upon, constantly thinking that, okay, what is good, to what extent I should allow these social media apps, that I also get benefit from them, but at the same time, I feel that I'm secure. अच्छा जाहिद, मेरा ख्याल है अब It's हम a very active process. इसी पे ख़त्म करते हैं। और एक तो शुक्रिया आपका दोबारा, दूसरा ये कि बड़ा मज़ा आया यार। एक तो मुलाकात बड़े अरसे के बाद इतना अरसा हुई और बहुत से दोस्त और भी थे। बाकी ये है कि जिस तरह से आपने आर्गुमेंट बिल्ड किया, मतलब ये नहीं है कि उससे एग्री ना करें जिसने नहीं करना, मैं तो करता हूँ चूँकि हमारी डिस्कशन इस पे होती रहती है। तो उस एग्रीमेंट से हट के उसका जो 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 ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंस्ट्रक्ट है, वो बड़ा सिस्टमैटिक है। और मेरे ख्याल में ये डिफरेंस भी है कि जो सोशल मीडिया आर्गुमेंटेशन है वो सिस्टमैटिकली बिल्ड नहीं होता। वो बस जहाँ से भी उठा लें, आपकी एक पोजीशन है, आप ले लें, आप उसको फिरका बना लें, रिलीजन बना लें, जो मर्जी बना लें, लिबर्टी है टोटल। तो इसमें ठीक है, इसमें गुंजाइश है क्वेश्चन करने की भी, डिसएग्री करने की भी, और दोनों साइड्स हैं। तो इट वाज रियली वंडरफुल, वी ऑल एंजॉयड अ लॉट। और मैं आपसे चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये हमारे साथ पहली दफ़ा इंटरेक्शन जो है मुकालमा के। पहले तो हम वैसे करते ही रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी फीडबैक दीजिएगा। और बिल्कुल सोशल मीडिया नॉर्म्स के मुताबिक फीडबैक नहीं देनी है आपने, अपनी बिल्कुल कैंडिड ऑनेस्ट फीडबैक आप शेयर करें। बिल्कुल, एक तो शुक्रिया कि आपने इस गुफ्तगू को पसंद किया, और क्योंकि ये टॉपिक हम दोनों के काफी करीब है और मैं इस पे सोचता भी रहा हूँ और बात भी करता रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि इस पे बात हो, और इसीलिए आई प्रपोज लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक। और पाकिस्तान में ज्यादातर ये कॉमन डिबेट में नहीं आता, तो इट वाज रेलेवेंट। दूसरी बात कि आई एम सुपर हैप्पी कि आपके जिस मुकालमा में सारे लोग हैं, दे ऑफ कोर्स दे आर लाइक अ बेस्ट पीपल ऑफ दिस सोसाइटी, or they all are so thoughtful, and I would love to be part of that, and we try to find more time to just continue and also join other talks. बस ये मेरी कोताही कहें, लापरवाही कहें, तो या distraction कहें, so I think somehow I am not very committed to any kind of a platforms, but I like to be. नहीं, वो कुछ दोस्तों को तो अंदाजा है, मुझे भी है कि वो आपकी बहुत सारी जो एंगेजमेंट्स हैं वो उनकी नौयत क्या है, तो उसकी वजह से काफी मुश्किल था और बड़ी देर के बाद हम कर पाए। लेकिन अब उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम, चूंकि इस एक्सपीरियंस के बाद आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि ये लास्ट टाइम नहीं हो, हम दोबारा भी मिल सकें। बिल्कुल, इसको रखेंगे, और अगली दफा जब मैं आऊंगा तो मुमकिन है कि आपके जो दूसरे इन पर्सन मीटिंग्स हैं वो ज्यादा दिलचस्प होती हैं, आप लोगों से गपशप करते हैं, और बाद में चाय के लिए भी जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मसला ये कि जूम के बाद आप चाय पे इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है, अपनी अपनी चाय ऐसे ही। हाँ, तो चाय आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। साजिद साहब बैठे हुए, साजिद साहब का पिछले से पिछला सेशन था, बड़ा मजे का था जैसा आपका था आज। साजिद साहब, आप जाहिद साहब से कर लें, क्यों बात करनी है तो फिर हम सर मैं जाहिद साहब से बड़े अरसे के बाद सुनने का मौका मिला कॉलेज के बाद आज, बल्कि वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई। बहुत मजे का, बहुत थॉट प्रोवोकिंग और आई ओपनिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में जिनमें मैं केयरलेसली चीजों को मैनेज करता हूँ, तो उसमें, लेकिन ज़रा ऑब्वियसली ये ऐसी चीज है जिसको रेजिस्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन उसमें हमने अपनी पर्सनल स्पेसेस के लिए वो स्पेस क्रिएट करनी है, उसमें ज़्यादा हमें बहुत सारी चीजों के बारे में इनलाइटन किया, रियली डिलाइटफुल, ये बड़े जबरदस्त प्रोडक्टिव एक्टिविटी रही। थैंक यू बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया साजिद, मुझे जिक्र करते रहते हैं दोस्त आपका, खास तौर पे रिसेंटली कासिम यकूब ने जिक्र किया था कि आपकी मुलाकातें होती हैं उनसे, और आप न्यूज़ में कॉलम पे लिखते हैं, तो मैंने एक दो कॉलम्स पढ़े आपके रिसेंटली। आई एम आल्सो वेल इन्फॉर्म्ड, दो आई डोंट कांटेक्ट ऑफन। गुड सोशल मीडिया कनेक्शंस। बस सोशल मीडिया से ज्यादा दोस्त। हाँ, जाहिद, तो लालपुर का एक और स्कॉलर भी है अमेरिका में आजकल, उसने मुझे मैसेज किया था, मैंने जाहिद का सेशन ज्वाइन करना, मेरा ख्याल आया, वो लालटन वाला शहबाज ना, अली शहबाज। हाँ नहीं, वो मेरा ख्याल नहीं। हाँ नहीं, वो आजकल वो शहबाज करा परवाज, उसकी परवाज और आई थिंक